Hello, guys. Welcome to BTC Strategy, episode 15. I am Bhavik. Digant is with me. Today's episode is going to be interesting as always. Bitcoin price is down this month. Is down again. It's again near the September opening. September में लोगों को सरप्राइज किया, एकदम ग्रीन, सीधा 107 से 1118 10-11% प्लस जाके अभी बिटकॉइन फिर से उधर ही आ गया है, लोगों को सरप्राइज कर दिया है. एंड सेंटिमेंट इज सेंटिमेंट लुक्स बेरिश एज ऑफ नाउ. वी विल डिस्कस कि सेमिलर साइंटिफिक जो को एक्वायर किया स्ट्राइव डिजिटल ने, एसएसटी ने, वो डिस्कस करेंगे. उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स है. जेट किंग की न्यूज़ है इंडिया में सेबी की तरफ से, वो डिस्कस करेंगे. बाकी छोटी मोटी और चीज़, आपके जो कुछ क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. वी विल टेक इट नियर द एंड ऑफ द शो. एज यूजुअल द शो विल बी अराउंड 50 to 60 minutes. सो या इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. प्राइस again, price is at 109,680. It's at market cap is at $2.18 trillion. मार्केट कैप अगर आपको दिख रहा हो, या स्लाइड आ गई. हाँ, तो ये स्टार्टिंग करना है यहाँ से? नहीं 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 नहीं, मेरे अपडेट रिफ्रेश नहीं हो रहा है. रिफ्रेश नहीं हो रहा है. समथिंग प्रॉब्लम है. Yeah. So as usual, Bitcoin price is at 109,700. Hash rate मस्त अब जा रहा है 1000 exahash से 6% अप है, 1.06 जेटा हैश. इट मीन्स कि नेटवर्क डिफिकल्टीज एट ऑल टाइम हाई. इसको आप ऐसे देख सकते हो कि बिटकॉइन का जो पूरा नेटवर्क है, करंट जो अमेजोन, नेटफ्लिक्स, उन सब की जो सर्वर्स है अदर देन बिटकॉइन, सारे अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनका कंबाइंड कैपेसिटी इन बिटकॉइन का हैश रेट कैलकुलेशन में इट इज अराउंड 30 to 35 एक्सा हैश. बिटकॉइन का नेटवर्क है वो 1060 एक्सा हैश है. सो ये जो मैं जो बता रहा हूँ, ये सर्वर के जो डाटा है दैट इज 2 years ओल्ड. माइकल सेलर ने एक रॉबर्ट बिडलो पॉडकास्ट में बोला था. सो दैट इज 30-35 गीगा एक्सा हैश. सो बिटकॉइन नेटवर्क इज 20 times मोर देन ऑल द कंबाइंड सर्वर्स इन द वर्ल्ड. सो एक तरह से आप ये देख सकते हो, दिस इज द, लाइक, अब बोलते लोग कि क्या बैकिंग क्या है बिटकॉइन के पीछे, दिस इज द रियल माइनिंग जो है वो उसको बैक करती है एनर्जी वाइज. बट देर आर सो मेनी मैकेनिज्म. बट दिस इज, ये समझो कि जब हैश रेट एक्सप्लोड होता है, प्राइस डज फॉलो इट. प्राइस हैज ऑलवेज फॉलोड द हैश रेट ग्रोथ. So yeah, decline from all time high. So Bitcoin is at now minus 11.9%, मतलब कि 12% down from the all time highs of $124,460. अनदर थिंग इज कोर नोट्स की बात चल रही है. कोर नोट्स को हम और बिटकॉइन वीकली के एपिसोड में मंडे को डिस्कस करेंगे. बट अभी दिस फाइट इज स्टिल गोइंग ऑन. एंड अगर आप इसमें कंफ्यूज हो कोर और नोट्स के बीच में, देन डू वॉच इट, ध्यान से देखो. बट इट इज हेल्दी फॉर बिटकॉइन. जब भी कोई फाइट होती है, जब भी कोई दोनों के बीच में कोई भी चीज में जब क्या बोलते टकरार होती है, दैट इज गुड फॉर बिटकॉइन. उसको देखो. एंड या बी विजिलेंट, स्टडी बिटकॉइन. ट्रेजरी की बात स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी देर आपको एक प्राइस अपडेट देना चाह रहा हूँ कि ये जो रिसेंट पंप है, व्हाट डज इट मीन. सो अभी आप ये समझो, ये हमारा एज यूजुअल ऑलवेज ये जो है वो इक्लिप्स है. इक्लिप्स के चार्ट्स है. ये जो राउंड जो दिख रहे हैं आपको, इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स. तो लास्ट में जब लास्ट सितंबर में जब रेट कट हुआ था इधर, उसके बाद 18 सितंबर को रेट कट हुआ था, इधर आपको दिख रहा है. फिर बिटकॉइन ऊपर गया था एंड देन इक्लिप्स आया था. इट क्रिएटेड अ बॉटम एंड देन इट मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई. उसके बाद अभी रिसेंट जो इक्लिप्स था मार्च में, तब कोई रेट कट नहीं हुआ था. बट ये देखो कि इक्लिप्स के बाद बिटकॉइन ने न्यू लो बनाया एंड देन वो सीधा 10-20% अप मूव दिया. तो अभी लोग बैरिश हो रहे हैं. बट अब ये देखो कि यहाँ पर इक्लिप्स था और यहीं पे रेड कट किया है.
सब लोग बुलिश हो गए थे, रेट कट किया है तो अब तो सब मस्त होना है, सब अच्छा होना है, बट प्राइस डाउन आ गया। जनरली ऐसे ही होता है। पर्सनली मुझे नहीं लग रहा कि दिस इज द टॉप। अगर हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, बट मुझे लग रहा है कि क्वार्टर फोर सबको सरप्राइज करेगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम में बिटकॉइन काफ़ी ओवरसोल्ड है, बट लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखो आप, तो पिछले 2 ढाई साल 3 साल से बिटकॉइन अप ट्रेंड में है। लेकिन हमने लास्ट 6 महीने में 100 के ऊपर काफ़ी लार्ज बिटकॉइन होल्डर्स की सेलिंग भी देखी है। बट स्टिल बिटकॉइन इज एट 108 109 112 भी गया था। सो ये एक चीज़ देखने की बात है कि लास्ट मार्च में जब इक्लिप्स था, इक्लिप्स के बाद बिटकॉइन मेड ए न्यू लो एंड देन अगेन ऑल टाइम हाई। सो इस बार भी कुछ ऐसा होता दिख रहा है। सो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक पता चलेगा आई गेस कि जो लोग अभी बेरिश हो चुके हैं वो सही है कि नहीं है। बट आप ट्विटर फीड्स देखो तो सब बेरिश ही है, सेंटिमेंट बेरिश है, लोग ऑल टाइम हाई शायद भूल चुके हैं। एंड यही जनरली टाइम होता है जब मार्केट बिटकॉइन सरप्राइज करता है। एंड आप देखो तो क्वार्टर फोर जनरली हाविंग के बाद क्वार्टर फोर बुलिश होता है। सो या इसमें आपका क्या कहना है दिगंत? हाँ, अभी तो सेंटिमेंट बेरिश ही है ओवरऑल एक्स पे, या फिर मतलब बहुत टाइम हो गया अभी इसी प्राइस रेंज में, मेरे ख्याल से 1 साल से हम 100 के अराउंड ही घूम रहे हैं। तो सही बात है। लोग लोग मतलब फिर भी अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से नियरली 10-11% ही डाउन है। बट जो हाँ। टाइम कंसोलिडेशन हुआ है हम्म। उसमें शायद लोग ये हो गए, मतलब यहाँ से 100 के से अभी भी 109 तो ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब हम्म। बिटकॉइन में गेन तो शायद। बट भाविक, जब मैं इसको देख रहा हूँ चार्ट को, मतलब मुझे उतना चार्ट का एनालिसिस मुझे पर्सनल लेवल मुझे समझ में आता है, बट मैं कभी करता नहीं हूँ ज़्यादा। तो ये आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है क्या? नहीं। ये ना, हाँ। हाँ हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर है। बट अभी ये हेड एंड शोल्डर में ऐसा होता है कि इट इज पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर, इट कैन गेट वेली इनवेलिडेटेड। सो उसको इनवेलिड होने के लिए अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल में जाए तो ये जो लेवल है, ये तोड़ा, इसके नीचे, ये हेड एंड शोल्डर का जो ये जो बेस बन रहा है ना, इसके नीचे जब टूटेगा और इसके नीचे क्लोजिंग आई वीकली या मंथली में, तो हेड एंड शोल्डर कंफर्म हो जाएगा। देन वी विल गेट अ बाउंस हियर। ऐसे हो गया, अगर नीचे क्लोजिंग हुआ तो यहाँ बाउंस हो गया, देन देर इज अ ब्लड बाथ, देन देर इज अ ब्लड बाथ। सो वो पोटेंशियल फॉर्मिंग है, पोटेंशियल फॉर्मिंग हेड एंड शोल्डर है। इट इज नॉट, अभी अच्छा। कंफर्म नहीं है, इट इज कंफर्म नहीं है, बट या एक देखने की बात है। नाइस, देख सकते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो एकदम डाउन पा चुका है, बिलो 30, 28 चला गया था। सो वॉरेन बफेट का ऑलवेज कहना है बाय द फियर सेल द ग्रीड। सो बाकी जनरली प्राइस ऊपर जो अभी है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ पे पूरा ये सारा सपोर्ट में, रेजिस्टेंस जोन ये, हाँ सपोर्ट, सॉरी, सपोर्ट में ना, हाँ। सपोर्ट। तो हम्म। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर थोड़ा ये हम्म। है, क्योंकि बहुत टाइम हम्म। से पिछले बार भी यहीं से ही सपोर्ट लिया था, हम्म। शायद 1,07,000 से। तो मैं अगर इसको लेट्स टॉप, सी। पता है कब है, कब एक्सपेक्ट करता? अगर ये जो अभी अभी जो गया ना दिगंत, ये जो गया अभी है यहाँ से जो रिवर्स किया, इसकी बजाय ये अगर ऐसे जाके यहाँ इसका हाई लेता ना और फिर अगर यहाँ आता ना, तो गया समझो, तो फिर वो एकदम नीचे गया समझो। बट उसने अभी क्या किया कि ऊपर का हाई लिया ही नहीं यहाँ पे, ज्यादा लोगों को शॉर्ट में ट्रैप नहीं किया है, लॉन्ग्स में ट्रैप नहीं किया है लोगों को। तो हम्म। वो भी एक देखने की बात है, ये ज्यादा ट्रैप नहीं किया है। यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी, और वो अगर मार्केट को अगर नीचे गिरना होता ना, देखो ये देखो आप, यहाँ देखो अच्छे से गिरा था, यहाँ से लेके सीधा अच्छे से गिर गया था वो। तो वो अगर उसको नीचे गिरना होता तो वो अच्छे से यहाँ पे ऊपर हाई लेता और फिर गिरता, बट वो हम्म। अभी तक नहीं हुआ है। सो मुझे नहीं लग रहा, मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे नहीं लग रहा दिस इज द लाइक फॉर मी, दिस इज अ वेरी हाई रिस्क। शॉर्ट में इतना मुझे नहीं दिख रहा, ऑब्वियसली ट्रेडिंग करना नहीं है, बट कहने की बात कि बिटकॉइन को शॉर्ट नहीं करो, बट दिस इज द गुड टाइम
एवरेज बाइंग के लिए अच्छा है। और अगर आप 200 मूविंग एवरेज देखो ना, तो वो भी इधर 105 पे आसपास आ रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज। और यहाँ पे अच्छा। भी ये, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज चल रहा था, 200 डे मूविंग एवरेज तो। और अगर बिटकॉइन को अच्छे से ऊपर जाना है तो एक बार वो नीचे से लिक्विडेट करा के लोगों को शॉर्ट्स में फंसा के, अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है, इसको नीचे जाना पड़ेगा पहले, नीचे लोगों को फंसाएगा, देन ऐसा सरप्राइज करेगा ना अक्टूबर में, ऐसा सरप्राइज करेगा मुझे अगर, और ऐसा सरप्राइज करेगा, बहुत सरप्राइज करेगा, क्योंकि लोग तो भी डर गए। सो लेट्स सी, देखते क्या होता है, नेक्स्ट वीक या के एपिसोड में पता चल जाएगा हमें। बट या ये प्राइस डाउन है तो थोड़ा डिस्कस कर लिया हमने। एंड अगर हम फिर बाद में ट्रेजरी की बात करें तो वो सब तो बहुत डाउन है ज़्यादा, करते हैं देखते हैं। सो या नेक्स्ट थिंग, the most important Bitcoin conference in Goa, organized by BitPlebs। अगर आपने अभी तक टिकट नहीं लिया तो टिकट ले सकते हो, luma.com/bitplebs में जाके आपको पोस्ट मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी कमेंट्स में। bitplebs, luma.com/bitplebs। एंड इसमें वो है क्या कोड, लेट मी चेक। है शायद इसमें भी। बिटकॉइन शेयर्स, अगर आप बिटकॉइन से अप्लाई करते हो 25% ऑफ हो जाएगा। सी आपको दिख रहा होगा ना, बिटकॉइन शेयर में हाँ 25% ऑफ है। सो ये तो बिटप्लेब्स, और अगर बिटप्लेब्स ट्रेजरी के लिए अगर आप सेमिनार के लिए टिकट अभी तक नहीं लिया तो वो ले सकते हो। अगर आप बिटप्लेब्स ट्रेजरी से टिकट लेते हो तो आपको बिटप्लेब्स का पास इंक्लूड है उसमें। सो बिटप्लेब्स ट्रेजरी इज 3999। देख लो इसमें क्या क्या है। एंड इसमें बिटप्लेब्स का पास इंक्लूड है, इसमें भी सेम कोड है बिटकॉइन सीयर्ज, एंड बीटीसी स्ट्रेटेजी भी है शायद। हाँ, बीटीसी बिटकॉइन स्ट्रेटेजी, शेयर ही 25% है ना, ये 10% है। हाँ बीटी स्ट्रेटेजी तो 10% है। यस, तो बिटकॉइन सीयर लगा दो, बिटकॉइन सीयर लगाओगे आप तो 25% ऑफ हो जाएगा। हाँ, सो आपको 3000 में पड़ेगा। सो ये भी है। सो अगर आपने अभी तक नहीं किया टिकट, बुक कर सकते हो। नवंबर गोवा समिट इज ए टू 1st and 2nd नवंबर। बट बिटप्लेब्स ट्रेजरी का जो है दैट इज ऑन एक दिन पहले, 31 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक, 3 दिन इवेंट है, 3 डे इवेंट, या 3 डे इवेंट ट्रेजरी से मेरे पास। तो इसमें आपको बिटकॉइन ट्रेजरी के बारे में काफ़ी जानने को मिलेगा, इंडिया में क्या सीन है, न्यू ट्रेजरी कंपनीज आ रही है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे हाउ टू वैल्यू इंडिया का बिटकॉइन सीन तो ट्रेजरी नहीं है कंपनीज। अभी, जो भी सीन है वो बाहर का है। बाहर का है, इंडिया का सीन में थोड़ा इश्यू है, उसको भी हम कवर करने वाला है। ठीक है, जेटकिंग से स्टार्ट कर दे, जस्ट लेट्स कवर जेटकिंग फर्स्ट एंड देन विल गो अब्रोड, या है ना। या सो जेटकिंग का है, ये है कहाँ पे, इकोनॉमिक टाइम्स में आया है। कुल मिला के सेबी ने या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, बॉम्बे बीएससी स्टॉक ने। एक्सचेंज ने, हाँ बीएसई ने अप्रूवल, जेटकिंग जो शेयर, न्यू शेयर इश्यू करके फंड रेज करके बिटकॉइन लेने के लिए उन्होंने मई में अप्लाई किया था, वो बीएसई ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि बीएसई देख रही है कि भाई जेटकिंग भाग रहा है एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो भी इन्वेस्टेड नहीं है कुल मिला के। तो लास्ट दिसंबर फरवरी का था वो, तो उन्होंने शायद अप्रूव कर दिया था। एंड जेटकिंग बॉट अराउंड 6 बिटकॉइन लिए थे, 6 बिटकॉइन लिए थे तब, बट ये वाला भी अप्रूव नहीं हुआ है। सो यही हर्डल है इंडिया में, पूरा वर्ल्ड बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी खेल रहा है। काफ़ी सारे फंड्स हैं, पेंशन फंड्स है जो बिटकॉइन नहीं ले सकते डायरेक्टली, वो उनको स्टॉक्स के थ्रू एक्सपोजर मिल रहा है बाहर में, बट इंडिया में अभी तक गवर्नेंस और अपना जो रेगुलेशन है दे आर वेरी फार बिहाइंड। सो दिस इज द रिक्वेस्ट टू रेगुलेटर्स कि डू स्टडी बिटकॉइन, डू स्टडी एंड वीडीए जो भी गाइडलाइंस है, बट समझो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो में डिफरेंस, क्रिप्टो इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, इट्स अ प्योर सेंट्रलाइज स्कैम्स, पम्प एंड डंप स्कीम्स, एंड बिटकॉइन इज टोटली डिफरेंट थिंग। सो आई अर्ज कि भाई देखो समझो बिटकॉइन को जानो। बिटकॉइन के फील्ड में इंडिया में जो लोग हैं, ट्राई टू कंसल्ट विद देम, ट्राई टू कंसल्ट विद बिटकॉइनर्स, form an opinion, publish some reports, and be open for the new technology, be open for the new एंड technology. So लाइक
you have to consider Bitcoin anyways. Like there are funds like Norway's sovereign wealth fund, Denmark's fund. So many funds are there in the Western nations who are investing in Bitcoin or Bitcoin treasuries like Hmm. MSTR and Metaplanet. So like if we don't adopt this, then we will get left behind. So I think it's high time to consider regulations and making things clear around Bitcoin. And yeah, that's what I Yes. would like. Mhm. And it is very pretty disappointing from our Indian Yeah. regulators, and it has always been like that. We have been just constantly attacking Bitcoin and crypto space. And first they banned crypto trading in 2018. Then then crypto community, Bitcoin community fight with in Supreme Court. They won. Indian government lose. Right, they lost the battle, and they had to allow Bitcoin cryptocurrency trading in 2020. So from 2020 January, and crypto is fully legal. Then in 2021 they imposed 30% tax, and you are not allowed to offset the losses. So again they attacked, and उसके बाद पूरा वर्ल्ड अभी स्टेबल, यूएस में स्टेबल कॉइन्स बिल आ रहा है. And the most important thing, the Pradeep Bhandari, जो बीजेपी स्पोक पर्सन है, they are he is writing very good articles, and he's focused on Bitcoin, not crypto things. He's focused on Bitcoin and stable coins, which are two important things. स्टेबल coins के जरिए अमेरिका बोल रहा है कि दे आर, रशिया ब्लेम कर रहा है कि दे विल जस्ट डेट है उनका, वो आगे सबको दे देंगे वर्ल्ड में, दे विल गेट rid ऑफ डेट. बट दे दैट्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 50 years, because they can print dollars, then they can give it to their American citizens. But the burden of inflation is levied by all the global citizens, because every country in the world holds dollar reserve in their banks, central banks, RBI and other banks. एंड हमने देखा 2016-17 से आप देख रहे हो ना, तो वर्ल्ड में जो यूएस ट्रेजरी है वो डंप हो रही है. बट एट द सेम टाइम सारी करंट कंट्री की जो करेंसी जो कलेप्स हो रही है, सो द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दे आर गोइंग बिहाइंड यूएसडीटी. अभी उनको बिटकॉइन समझ में नहीं आ रहा, बट उनको उनके लिए यूएसडीटी इज लाइक बिटकॉइन, बिकॉज उनकी करेंसी हर USDT दो is महीने second में, best. है ना, बिकॉज उनकी यूएसडी, USD. उनका जो क्या बोलता है, उनकी जो लोकल करेंसी है वो साल में 3-3 4-4 गुना वैल्यू कम हो जा रही है. मतलब कि इन्फ्लेशन वहां पे 100%, 150%, 200%, 500% इन्फ्लेशन है. तो उनके लिए तो डॉलर स्टेबल है, मस्त है. लाइक डॉलर इज गोल्ड फॉर देम, बिटकॉइन इज फॉर देम, लाइक बिटकॉइन फॉर देम. सो वो भी तो डॉलर में है. सो दे आर यूजिंग यूएसडीटी. इंडिया में and बाकी सब जगह में भी यूएसडीटी भी घुस चुका है, अच्छे से घुस चुका है. अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह देखो तो स्टेबल कॉइन्स. सो उसको आप रोक नहीं सकते, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी है. लोगों को अपना टाइम, अपनी वो बचाने के लिए इट अलाउज देम ना, तो वो यू कांट स्टॉप इट. सो एंड ऐसा भी नहीं कि अगर इंडिया अपना आईएनआर स्टेबल कॉइन बना दे तो सब सही हो जाएगा. नो, देर इज, अभी सब सही दिख रहा है. वर्ल्ड में जो हाईएस्ट लिक्विड मार्केट है बिटकॉइन, बिटकॉइन की जो हाईएस्ट लिक्विड पेयर है वो यूएसडीटी में है, डॉलर स्टेबल कॉइन्स में. सो the road to bitcoinization goes through the stable coins. So yeah, Setu has joined, I guess. Hi Setu, Yeah. how are you? Hey everyone. Yeah, hi, hi, how are you? Aryan Awaj, yes. So yeah, we were Yes. discussing stable coins, Bitcoin, जेटकिंग को कैसे इंडिया में प्रॉब्लम हो रहा है. Our regulators are not acknowledging the new paradigm shift happening, and वो लोग अभी प्रिपेयर नहीं है. पहले तो टैक्स डाला, फिर बिटकॉइन अलाउ नहीं कर रहे, सेल एक्सचेंज में यू कांट विड्रॉ. एंड अगेन अब जब लोग स्टॉक मार्केट के थ्रू बिटकॉइन लेना, एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, बोला वो भी नहीं लेने देंगे. तो ये तो क्लियरली दे आर ये क्या बोलते हैं, इनकरेजिंग द आउटसाइड मार्केट. लाइक पीपल विल लीव द क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड मार्केट ना. Yeah. सो I ये think है. it's been a बहुत ही interesting discussion हुआ था. Last week we had a very interesting discussion on the first introductory session of Bitcoin Treasury seminar. So where हम्म. Alok had a lot of points on this, and he's a hardcore Bitcoiner, right? So he does not believe that it should be an asset that companies and government should be holding. It should be asset that people self custodially should be holding.
right? And his point was this actually enables Good. more people to hold it themselves. Nice. Because but मेरा counter point है कि see there will always be people who will prefer comfort and ease of UX नाम की चीज होती है ना, you have to have a best user experience, and buying it from Yes. an exchange जहाँ पे आप इक्विटी बाय करते हो, दैट इज जस्ट सच अ गुड यूएक्स कि लोग शिफ्ट कर जाएंगे, पीपल विल जस्ट स्टार्ट बाइंग माइक्रो स्ट्रेटजी, मेटा प्लैनेट, because they don't have other option in the country, and Yes. you are Yes. basically Yes. helping them take the money out of the country. तो एक Yes. चीज जो इसके एक और जो ramification है इसका, वो ये ramification है कि, and this is an important ramification, in a lot of countries where Bitcoin treasury companies exist, existing Bitcoin companies will feel, why would they get into Bitcoin if they're not becoming a Bitcoin treasury? Because customers will just buy Bitcoin treasury. They will not buy a company which has Bitcoin exposure, right? But Hmm. this Hmm. levels the playing field. So Hmm. right now it opens up all the companies in BSC and SC. If they want to Hmm. give 2% allocation to Bitcoin or 1% allocation to Bitcoin, they should, and they would, because they are not losing out just by not playing this game. Everyone will not play this game, right? So this game is anyway stacked for people who have such high conviction on Bitcoin that they want to go not 100% but 500% in, like take 400% debt, uh, issue shares, do warrants, right? So it's not even for those people who have 100% conviction. It's for people who have super natural conviction in Bitcoin, right? Leverage So play. yeah, so that is also, I mean, I'm seeing probably the positives of this. There are, of course, obvious negatives of this. The first one being capital flight. The second one being we have such pioneers like Jet King and other companies which were doing this. They will be Hmm. disheartened, right? So there Yes. are Yes. Yes. obvious Yes. negative connotation, but we should also look at how we can enable this to get more people to come to Bitcoin and get more companies to come to Bitcoin, right? So those are also things that we can use this opportunity for. Yeah. Capital flight is a real thing. Like people will not stop there investing in Bitcoin treasury. They will just go out of India. And Hmm. this is like if you allow Bitcoin treasury in India, it's good for you as a government Hmm. because if they have like they generate some profit and you can collect capital gains tax. But I mean, not from the point of view of capital gains because also you have to pay taxes on your foreign profits as well. But the money should have gone to the Indian company, but now this Hmm. money will go to some foreign Yes. entity. I think Yes. more than Yes. money, Yes. I'm concerned about the Bitcoin would have gone to an Indian company, Yeah, Bitcoin is right? also going to foreign company. Now your money, you can, Yes. 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 the Yes. 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 Bitcoin is Yes. going Yes. out. Yes. It's neither with the अरे government, यार. nor with the company, nor with the customer. Like you are basically giving money for someone else sitting To outside hold India to buy Bitcoin. Bitcoin. Yeah, बिटकॉइन बाहर जा रहा है, मतलब आगे जाके इफ गवर्नमेंट नीड्स बिटकॉइन इन देयर बैलेंस शीट देन दे yeah, कैन जस्ट नेशनलाइज दिस कंपनीज, बट अब वो चांस भी गया. सो वो chance भी है. वी आर लूजिंग इट, वी आर लाइक बहुत गंदा है. दिस इज वेरी बैड न्यूज, लाइक बहुत गंदी बात है इंडिया के लिए. पहले टैक्स, फिर पहले बैन किया 2018 में, फिर टैक्स डाला 30%, एंड अभी भी स्टेबल कॉइन्स की कोई बात नहीं है. इसमें वो लोग बहुत आगे, इन सब में रिजेक्ट करने में आगे है, लेकिन आगे कोई इनोवेशन और ओपन नहीं है. सो क्या ही कर सकते हैं इसमें, ये I कर think सकते हैं कि जस्ट लाइक मोर एंड I मोर don't पीपल नीड टू know स्पीक. how yeah how they are functioning because on one side Pradeep Bhandari has published this sort of positive article, but on the other side they are doing these kind of things. So I I don't just feel know that what exactly are they thinking. I think यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लगता है कि people, of course, they have dedicated some time, so they know that Bitcoin is something that will take multiple governments to come. And when I talk about Bitcoin, I talk about crypto, like virtual digital assets. Also, it will take like government collaboration to happen for you to, you know, on ramp and off ramp pay for you to track and all of that. And they are still hopeful that that can happen at some point in time. So we'll bring in regulations when that happens. But what they might be missing out on is you could use this opportunity to your advantage, right? Rather than looking at it as a threat, look at it as an opportunity to stack as much digital gold as possible. And you should be framing your policies, or you should be framing or approaching this through that lens,
that how can we stack as much digital gold as possible? How do we incentivize more companies to mine with the standard energy in the country? How should we incentivize more companies to hold it so that we can get a share from that reserve? How can we ourselves hold it? So I think wahan pe, I just feel that it's what is not there is probably having spent enough time in Bitcoin. Again, like this is a function of how much time have you spent in Bitcoin. Uh, that's Hmm. one. And the second thing is, it just, I believe it's this supernatural conviction that you have that you can create a money which cannot be debased, and which is a more, I would say, better money than Bitcoin. I'm not saying it's not possible. I'm just saying it's not possible in the current political setup that we have in the country, when we Yes, have to, yes. fund elections, where you have to spend money for you have to print money, you have to have infrastructure support, and the country is growing, so those pressures will be there for you to create. Yeah, so I just don't think it is the right thing to do right now. I hope like more things happen. Like Sandeep, I think Siddharth is planning to go to Securities Appellate Tribunal, right? SAT, just to have a conversation and figure out what are the next steps that they can do here. It was there in the news article. That's where I picked it from. But I just believe that it's also a great opportunity for us to reach out to more companies and tell them. Hmm. There is a link, I think, also, which we can open. Uh, Let me share it on. और इसमें कितना Yeah, मस्त देखो मेटा प्लेनेट इसमें सब दे कवर्ड एवरीथिंग दिस आर्टिकल इज वेरी गुड yeah, मेटा very good, very प्लेनेट good, very एमएचपीआर detailed article. डिटेल आर्टिकल है ट्रेजरी का एक्चुअली क्या प्ले हो रहा है सुगता घोष नाइस सुगता घोष Yeah. She has written गुड it beautifully. She has राइट mentioned राइट like what all falls with the financial regulator, and what all falls under the current regulations. Beautiful article. हम्म But I would say it's also a blessing in disguise for all the companies who are big companies, and who are not facing any troubles, and so they're not taking the Bitcoin treasury route. Now, no one can take a Bitcoin treasury route in the country. So it's a level playing field. Come and hold like 1% of your reserves into Bitcoin. You don't have to do fundraise. You can't do fundraise for holding Bitcoin, right? So it levels the playing field. Now, all the companies in NSE and BSC, whatever, 3,000 companies, or all of them can get exposure to Bitcoin, and हम्म no one has an edge. हम्म Yeah, या इट वाज सेम बिफोर इट वाज सेम नाउ राइट पहले भी लाइक एनीवन yes. कुड इंक्रीज बट या लोगों को पता ही नहीं था बट जिसको पता है लाइक समवन हैज एज जेट किंग को पता है बिकॉज ऑफ देयर कन्विक्शन इनटू बिटकॉइन बट नाउ दे कैन नॉट लेवरेज Actually, मेरे को तो ऐसा लगता है कि पहले ना, it was it was it had it there was more edge to smaller companies. So if you are running a 40 हाँ crore company, and if you hold two Bitcoin, suddenly like your MNAV is 20, right? हम्म I mean, 40 हम्म crore company worth two crore of Bitcoin. I would say your MNAV is 20. But now, if you are a company worth 400 crore valuation or 4,000 crore valuation, you can still hold two Bitcoin or three Bitcoin, हम्म right? हम्म People will not judge it from MNAV lens. People will mostly judge it from, I think, ऑपरेटिंग कैश I फ्लो see how many, how, yeah, so how good is the business doing, your traditional business doing. That's how people are going to gauge it from. And if there's another lens that people will apply it as to how many Bitcoins do they hold. And it's very easy for you, any company to hold 5 Bitcoin, 10 Bitcoin, 20 Bitcoin. So in that sense, it brings the field level playing, and or I would say it is a little more biased towards bigger companies who have bigger market cap, because earlier they would not hold Bitcoin because the Bitcoin will not uh, add to their narrative. A big company with say 1,000 crore of market cap, them adding to Bitcoin does not add to the narrative that they are a Bitcoin company. But now that narrative is gone completely, so it offers you this insurance protection, diversification. It offers you a chance to experiment with holding, and it offers you to tell the story that, you know what, if you want to get exposure to Bitcoin, this company also have Bitcoin, we also have Bitcoin, so why not? But given the, I mean, given the given how government is reacting to companies holding Bitcoin, I'm not sure like the
public companies will disclose even if they own some Bitcoin, or they will Hmm. take positive steps around this. That is a real danger of this. So it Yeah. is possible that this policy will discourage, because a lot of public companies will not get into the nitty gritties as to, oh, the regulator has issued, has made a issue on equity dispersal for buying Bitcoin, but Hmm. other areas are open. Like you can use your cash, you can use your whatever savings from your profit that you created. People will not care about that. People will just, like last time it happened, right? People like, oh, Bitcoin is banned in the country. No, Bitcoin was not banned. The banks were not allowing exchanges to get the money when Hmm. people were buying Hmm. Bitcoin, right? Hmm. Bitcoin was not banned, and that was Hmm. overturned by Supreme Court, right? This time Hmm. around, the same kind of fake news could be spread, which is, oh, the Hmm. regulators, the BSC has banned companies owning Bitcoin, which is not true. Yes. BSC Yes. is Yes. saying you buy Bitcoin, you hold Bitcoin, whatever you want to do with that, but don't issue equities so that you collect money and then buy Bitcoin. Just don't do that. Hmm. But Hmm. again, we all know how news works, right? So yeah, maybe. और मैं फिर से 2 साल पीछे कर धकेल दिया इस न्यूज़ ने, लाइक कहने के लिए ट्रेजरी कंपनी पूरे वर्ल्ड में प्ले चल रहा है और हमें 2 इयर्स पीछे कर दिया इस न्यूज़ ने। अगर जल्दी कुछ होता है तो ठीक है। अब इसी टाइम पे लोग बिटकॉइन सेल्फ कस्टडी करेंगे शायद, बट पता नहीं कितना परसेंट, बट या कैपिटल विल फ्लो आउट ऑफ द कंट्री इन अदर ट्रेजरी कंपनीज एंड दे विल होल्ड बिटकॉइन इंस्टेड ऑफ आवर कंपनीज। लाइक अब ये हमें प्राउडली कहते थे कि जेट किंग बिटकॉइन होल्ड कर रहा है, ठीक है, लाइक हाँ. बाहर की कंपनी होल्ड करे से हम चाहते थे कि इंडियन कंपनी होल्ड कर रही है, एंड दैट फील्स गुड, एंड दैट इज गुड बिकॉज इट्स इन आर जुरिसडिक्शंस। बट ठीक है, विल सी, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। आई होप कि कुछ एपिसोड में हम ये भी कवर करें कि नहीं फिर से उन्होंने अलाउ कर दिया है, एंड नाउ देयर आर सो मेनी कंपनीज, दैट टाइम विल आल्सो कम, बिकॉज आज नहीं तो कल, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। सो उनको आना तो पड़ेगा ही, आना पड़ेगा। बेटर कि वो जल्दी फास्ट आए, है ना। बाकी हाँ, आप लोग सब लोग बिटकॉइन ले ही सकते हो। जेट किंग शायद अपने कैश फ्लो से भी लेना स्टार्ट करेगा ही। दे, जैसे हम लास्ट टाइम कवर किया था, प्लान बी नेटवर्क के साथ इन्होंने एजुकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सो लाइक आफ्टर सम मंथ्स मे बी वी कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम दैट एजुकेशन इनिशिएटिव। और वो इतने सालों से एजुकेशन इनिशिएटिव एजुकेशन में है भी, they have the expertise, and now plan b is run by hardcore bitcoiners. तो there are some, let's see, अगर bitcoin course की demand बढ़ती है, then they can collect some revenues and then they can become the good education institute, and they can, if they can leverage AI, and so yeah, ये एक है, but it will, like, वो अभी टाइम है, let's give it 6 months. बट तब तक बिटकॉइन फिर पता नहीं Q4 भी आ रहा है। से तो आपका क्या कहना है, अभी बिटकॉइन डंप हुआ मस्त पिछले लास्ट वीक, क्या लग रहा है Q4? बाय बाय टाटा। uh, no idea, यार. No view on नहीं that. आइडिया, ठीक है। सेंटिमेंट What do बेरिश you हम guys कुछ think? बात कर रहे थे, हमने वैसे शुरू में डिस्कस किया, बट या हम दोनों वी आर रेडी फॉर सरप्राइज इन क्वार्टर फोर रेडी फॉर सरप्राइज अपसाइड for new all time high. TLDR is like, new all time high can come, a very big new all time high. ठीक है। दिगंत ने मस्त स्लाइड्स बनाई हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया है। स्ट्राइव ने सेमिलर को एक्वायर किया है। सो क्या क्या इसके रिपरकशंस है, सेमिलर्स के शेयर होल्डर को फायदा है, नुकसान है, उसके बारे में दिगंत विल शेयर। या यू कैन स्टार्ट मे बी। So last week, Strive announced this merger with Semler. In the starting, they gave around 210% premium. So this is based on the Friday price close of like last week. So Friday price of ASST was 4.3, and the exchange. This is all stock deal. So similar shareholders will get 21.05 stocks of ASST. So if you multiply 4.3 by 21.05, 4.3 into 21.05, you get 90.5. Yeah, this thing.
So as of now, ASST is at 2.5. This is I have done this 2 days earlier. So the price at that point in time was 2.89. Now it is 2.5 or something. But like Bhavik, can you come down or go to the next slide? I think Bhavik is not here. Uh, yeah, he is He's back. back. Yes, Yeah, yes. can Should I go can to you? the next slide? Yeah. So yeah, this is the thing. This is an all stock deal, fixed exchange ratio. For every one share of Semler, you will be getting 21.05 shares of ASST. So this is just the announcement of merger. Generally, like these merger and acquisitions take 3 to 6 months. And according to Friday, the implied value is 19.52. According to the time when I have created this slide, the implied value is 60.79. Now, what is implied value? Implied value is basically what is the current share price of ASST, and I multiply that by the number of shares which similar shareholders will get. So as of now, Semler is getting around 60, so maybe 100% premium on current price. Uh, Yesterday the price was down because of Bitcoin's drawdown, but yeah, next slide. So here is pre-deal Bitcoin density, like what is the number of Bitcoin sats per share. So according to their current shares outstanding and all, ASST is around 927 sats per share, and Semler is around 33,427 sats per share. So this is going, yeah, go on. Yeah, you can go to the next slide. Yes. So post deal, what will happen? These 15 million shares, each share will be multiplied by 21.05. This will add additional 315 million new shares. Then total shares post merger will be 635 plus 315 equal to 950, and combined Bitcoin holdings. Then this will increase sats per share of ASST from 927 to 1147, 24% Bitcoin per share accretion. For similar shareholders, the deal is not attractive from a Bitcoin perspective. So why this is the thing, like because Semler is currently trading at a discount to NAV, and that's the reason why ASST has acquired it. uh, According to my knowledge, I think Semler is around zero point 0.7 to zero point 0.8 NAV right now. Mhm. And like Semler shareholders are more of like their medical business shareholders. They don't want to go into Bitcoin things. Also, Semler did this preferred stock. They wanted this permission of issuing preferred stock from shareholders, but shareholders denied that. So this says that Semler's shareholder base is made up of their traditional business, their traditional medical and pharma business, and this is the reason why they don't care about Bitcoin per share. What they care about is the dollar value of Semler. So as of now, Semler is around 30, and if they are getting 60, then they are happy to receive that 100% premium. But what I think is not most probably this merger. I mean, it's very difficult for this merger to go ahead because if you can go to the next slide, Bhavi. Hmm. So this is more of like from Strive's perspective. Strive is using all stock deal because most probably they are not having the cash. Also, like strategic advantage is like by issuing stock directly, Strive effectively trades equity for Bitcoin OTC. So
let's say for example, instead of acquiring Semler, let's say they have to issue ATM, then this will take lot of time for Strive to issue that much amount of shares. But when they are acquiring Semler instead of Bitcoin, they can issue shares directly to Semler shareholders. So this is kind of fast. But if they want to go via BTC route, then first issue stock, then collect cash, then buy BTC. So this is a long time for them. Next. Hmm. Yeah, this thing. So this is the reason why I personally think the merger is difficult to go through, because ASST also has pipe overhang. So their pipe issuance is pending. Most probably, if pipe, basically how the pipe works, I'm not sure if I had talked here or in TradFi and Bitcoin Club about pipe. So what happens in pipe is basically millions of dollars of shares are open on a day, on a specific date, and that opening is huge in terms of trading volume. So let's say for example, daily trading volume of a share is 10 million or 30 million, but the pipe opening is of 300, 400, 500 million. Then how will price settle? Because this much amount of share is overloaded in the market right now, and this is very hard for a share to sustain its price during pipe. So this is hard from my perspective, and that's the reason why I personally think ASST will come around one times MNAV of around 1.13 to 1.81. So if you multiply this price into 21.05, you will get 23.79 to 38.10, which is basically what we are at right now. So Hmm. if similar shareholders are getting today's price, then why will they vote for merger? this is Hmm. this is my understanding from my Okay. perspective. If pipe is open, I think pipe is opening at 16th October. So I'm not very positive on this, but this is a historic deal happening in Bitcoin treasury space, because this will most probably ensure or make some, like, make market figure out that any company trading at a discount to NAV can be acquired by a potential company who is trading at a higher MNAV. This will be much more accretive. So let's say a company who has MNAV of 2, instead of buying Bitcoin, they bought a company at zero point 0.8 NAV. Then they are getting 20% extra Bitcoins. So Hmm. this is positive for acquirer. But Digant, because this is, yeah, but in that case, the pointed MNAV company is not being acquired at pointed MNAV prices, right? They are being acquired at 1.6 MNAV prices, almost double the pricing, right? So then that opportunity is not there. If you can buy them at a discount point less than 0.8. 1 BTC, Yeah, yeah, yeah. yeah. So what was the MNAV? Even if they gave, instead of giving this huge 210% premium, even if they gave uh, a premium which satisfies one times MNAV, then also I think I'm not sure about how this will work. But if they gave an MNAV of one, like one times MNAV, and they fairly Hmm. valued that company, if the management of that Bitcoin treasury company thinks that this is good, and if we merge, maybe we Hmm. can do preferreds and something. So ASST is going to issue preferreds. That's the reason why they are acquiring. They have took this decision to acquire similar. Uh, but yeah, that's a valid point. If you are acquiring a नहीं एक चीज company, you need to give a एक premium. चीज So how will that work? Yeah, I mean. इसमें सेतु का जो क्वेश्चन है ना, वो कि हम प्रीमियम क्यों दे रहे हैं जबकि वो लेस देन वन एमएनएफ पे ट्रेड कर रही है, तो प्रीमियम क्यों दे रहे हैं? No, my तो point is इसमें शायद premium तो रहेगा ही रहेगा. Yeah, premium will be there. Premium will be नहीं, there, कोई right? कंपनी अगर वो 0.8 एमएनएफ पे ट्रेड हो रही है, सो यू कांट एक्वायर देम एट 0.8 एमएनएफ, ये बोल रहे हो ना आप? यू हैव टू गिव Yeah, 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 the देम yeah. shareholders प्रीमियम, will not be okay for that with that decision. Yes. अदरवाइज दे वोंट सेल They ना, will want दे some वोंट सेल. premium. Yeah, they won't हाँ. sell. एंड वो भी देखो कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग 5000 बिटकॉइन.
इन द ओपन मार्केट, बिकॉज वहाँ पे उतनी लिक्विडिटी भी होनी चाहिए एंड न्यू शेयर भी इश्यू होना है, एंड वो करते करते अगर एटीएम गिर गया, एमनेव गिर गया, तो वो कर भी नहीं पाएंगे। सो Yeah. अभी वो अभी वो क्या बोलते हैं, झटका लेने के तैयार है, बाद में इट विल गिव देम रिटर्न। I think the deal works for both of them. So there are Bitcoiners sitting inside similar who wanted to preferred. Now those Bitcoiners cannot do preferreds, but they are getting a share which can do preferreds. So Yeah. in that sense, they're saying, Strive will do preferred, and we are also the owner of Strive. We got smaller stake in Strive, but we run Strive. यस Uh, यस यस so यस यस it works for similar people. It works for similar shareholders because they get double the money, and it works for these guys. It does not work for their shareholders though. Strike shareholder, like Digant explained, it does not work that well for them. एंड स्ट्राइक का It मैनेजमेंट भी is बहुत स्ट्रॉन्ग किया है इन्होंने। it is working for Strive if this thing happens. It is not working for similar shareholders. Basically, let's say if Strive is at one times MNAV after their pipe, then similar what are similar shareholders getting 23.79 to 38.10. If you can see here, is my arrow visible or I think it's not visible. Bhavik, if you Yeah, can point out this 23.79, yeah, this one. So if like most probably ASST will be at one time sometime. So in this case, I don't think similar shareholders will vote for merger because anyway they are at that price. Um, so from so similar basically, shareholder similar perspective, shareholders I am don't not. make money. Yeah. If ASST is trading at one times MNAV, let's say if ASST is trading at two times MNAV, then the deal is done. Like they are getting $60 worth of like नाइस। value, then it is okay for similar shareholders to vote. But if pipe happens and if you see Bhavik, if you can open ASST's share price, that will be really helpful. ASST चार्ट। share, yeah, chart. ओके, आई विल जस्ट गूगल और दिस ओके। Yeah, yeah, this is okay. You can come to 1 month or maybe for yeah. So from like come to 1 month only. This is too much. Yeah. So from around nine, it is now 2.44. So already market is figuring out ASST at 1.3 because pipe is going to open at around 16th or 17th October. So if this trend continues in ASST, I am not too sure of similar shareholders giving yes vote for the merger because it is not like positive from their side of thing. But in any case, like even if MNAV is 2, MNAV is 3, MNAV is 1, MNAV is 0.5, in that case also similar, Strive is going to accrete Bitcoin per share. So if you can go back to the slide, uh, which come one side black slide back. One more. Yeah, here. So as you can see in the second point, total shares post merger. Total shares post merger for ASST will be 950 million, irrespective of their MNAV. Like even if MNAV is 1, even if MNAV is 2, even if MNAV is 3, and MNAV doesn't matter, even if MNAV is 0.5. In all the cases, total shares would be 950 million. And if merger goes successful, they will accrete 24% Bitcoin per share. But So this is after pipe deal, like this all yeah, after this is pipe and according after similar, yeah. both. No, Okay, this 635 million is considered like this is fully diluted share count. with pipe. So this includes the pipe and warrants and everything. So there are chances that like pipe can gets cancelled or no? No, how वो will हो pipe गया get ना? cancelled? हो गया ना फाइनल? अप्रूवल Yeah, हो गया pipe पाइप का? will pipe will unlock around 16th October. ओके So ओके, the people दिस who मच शेयर। invested in pipe, yeah. So people who have invested in pipe, they are open to sell on 16th October.
So if they sell something similar with Nakamoto went down 50 or 60% in a day. So Sequence if V, something, same yeah, time, same even like sequence. Sequans, yeah, Hmm. Sequans, Nakamoto, all these were pipe deals, and What is the I discount? What is the discount to uh, pipe investors as compared to retail share price? yeah, so pipe investors got they invested at around 1.3. 1.3 So what? 1.3 dollars. $1.3. And what The is the share what is price the right now share for price is Strive? 2 point Oh, something, so right? they got 33%. They got 40% discount. Like Saurabh, this pipe was happened 6 months earlier. If Bhavik, Okay. you can go back to the chart, uh, that will be more. Price chart. Yeah, Hmm. 6 months. Yeah, the pipe deal was around here, Saurabh. You can see spike here around May. Here Yeah. they invested at around 1.3, and after that point in time, the retail went crazy and kept buying. So pipe deal happened here, but there is a lockup which is there in pipe, and It's this it's, lockup will open on किसमें बताऊं? it's 16th asset. October. It's asset. Bhavik. Yeah, ASST. USST. नाका कर दिया मैंने. Yeah. Yes. नाका की आदत पड़ गई है हमें. या So तो पाइप डील यहाँ हुआ the ना. share price, yeah, share price at that point in time was trading at point 0.4 or point 0.5, and pipe deal happened at around 1.3. So uh, investors 1.3 invested at around 1.3, but इधर. they were not allowed to sell here when the price went up. They had a something Six lockup months period, lockup. and lockup period is ending on 16th or 15th October, Yeah. according to my knowledge. Yeah. So this thing, and this will cause, from my understanding, this will cause drawdown to one times MDAM. I So think Or I'm what is maybe not. even happening less is, than that. उससे yeah, नीचे भी Yeah, जा even सकता है वो. the existing investors are rushing to exit before pipe investors exit. They're like, हाँ. let me dump yeah, before these guys yeah, dump, and then once they dump, then I'll buy. और मे बी because शॉर्ट, already लाइक there are शॉर्ट भी कर सकते because हैं. already there are two examples before this. Like Naka also went down, Sequence also went down. So investors are now aware what is happening in the market. So they हमें ही are पता चल गया है. even me. I was even I was talking to Bhavik like, हाँ. Bhavik, it would have been more sensible if we were in some jurisdiction where we were allowed to हम्म, short. So हम्म. that would have Yes. made some sense. Like we would have made some, भाई because मैं it सीक्वेंस में will इधर go निकला हूँ. मैं इधर निकला हूँ सीक्वेंस में. it ऐसे will तो go निकल to जाओ. one times ML. It will most probably go to one times MNAV. And if this thing goes to one times MNAV, I am not sure of this merger हम्म. um, pulling off. So या. I mean, the team has done great work around merger, and it is profitable for Strive, profitable for Semler's management, but not profitable for their shareholders. So we have to see. I have not studied their voting percentage, like how much votes are with the management and how much votes are with the shareholders. But most probably shareholders have the majority vote, because Semler's preferred stock issuance have been voted out by shareholders. So shareholders have majority holdings. That's the reason why I am thinking that this merger might not go through. But हम्म. let's see what happens हम्म. if they There are two. change. और अगर Yeah, ना इसमें ये जो जनरली गैप भी मार्केट फिल करता है, ठीक है. yeah, gap तो fill. ये अगर ये गैप फिल किया ना, तो वो तो गैप तो 1/3 के नीचे ही है. तो वो अगर यहाँ गया तो फिर तो वो बहुत कम एमने डाल देगा वो. और यहाँ जाते ही फिर Then इसको फिर कोई और एक्वायर करेगा पूरे को. then it will be dilutive from dollar perspective also. Like right हाँ. now, Semler is getting $60 worth of their
For $30 worth of share, they are getting $60 of implied value as of 2.4 share price of ASST. But if ASST itself goes to zero point 0.5, then they will get to $20 for their हाँ. $30 worth of share. Why will they do हम्म. that? No sense. हम्म. I So think let's see what happens. अपने एएसएससी में एक कौन है? मेरे विवेक रामास्वामी है, फिर सीरीज हाँ जिजोडिया है, एमएसटीआर ट्रूनो टीम है पूरी. तो आई थिंक दे आर Yes. बेटिंग ऑन देम, मे बी Sri कनेक्शंस. Sridhar left he left MicroStrategy No, नो नो no, नो, he उसमें is एडवाइजर also टाइप रोल प्ले कर रहा है. he's on board. He's on board. on board. Okay. Yeah. So the And interesting thing is people used to say that in fiat standard 1/3 or half of the world's like GDP is just financial services, right? There's so many people working in finance which is not needed on Bitcoin standard. All of that will go away. It seems हम्म. for a brief time there will be more people sort of figuring out financialization of this whole space and just हाँ. manipulating things without adding any यस. value as is visible from this deal. ये सारा And जीरो the सम है second thing ना? that we yeah zero sum जीरो hai सम हो रहा है. but bankers are in and then people are building हाँ. acquiring companies and doing pipe but deals and all that. from a management perspective, like management is not pumping the stock. Management just has done the pipe deal. Like they have raised money at 1.3. But whatever thing that has happened from 1.3 to 16 or 15, that is not done by management. That is done by हम्म. market. So from what I think, market is not pumping. यस. Like management is not doing this pump and dump. Basically, this is the ill-informed retail who are entering at 1.3, 2, 4, 5, and यस. यस. entering at 15 and then getting out wrecked. So when you are investing in a pipe, you as an investor also have to do your due diligence. If you don't do due diligence and just ride the trend, then this thing will happen. Also, you So that can't really trust that by buying into a Bitcoin treasury company at 1 or 2 mNAV, you will be safe. Like companies can do all kinds of stuff, and I mean, you might not be safe even at 2 mNAV, even if you're investing in a Bitcoin treasury company at 2 mNAV. yeah, even 50% downside is there from 2 times M now. Uh, but yeah, वही current बात है ना, तो अपने valuations. लिए बिटकॉइन है. मतलब जो भी जनता Yeah. इसमें पढ़ रहे हो, बिटकॉइन करो. लाइक इसमें लाइक अगर ये ट्रेजरी जीरो भी जाती है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. उतना तुम अपने लिए अपने खुद को सॉलिड प्रूफ करो बाय बाइंग Basically, बिटकॉइन. the thing goes back to the that Venn diagram. If you want to excel in like understand what Bitcoin treasuries are doing, you should know these three circles: Bitcoin, security analysis, and fixed income market. So if you know these three, then only come here or try to understand these three circles and then come here. Without understanding these three, it's highly risky for you guys to be here in Bitcoin treasuries. मैन हमने भी काफी एजुकेट किया है, ऐसा लग रहा है मुझे लोगों को. Yeah, yeah, yeah. वी आर ट्राइंग टू एजुकेट. सही है. अब लोगों को समझ में आ रहा होगा काफी कि इस तरह करना है. हम लोग बिटकॉइन ट्रेजिंग करने में बताते हैं बट वी आर नॉट लाइक आई थिंक ब्रॉडली यू गाइस इट्स मोस्टली यू गाइस होस्टिंग इट बट यू गाइस आर नॉट लाइक टेलिंग देम जस्ट take this amazing opportunity. You're like, be cautious. There could be Yeah, an upside in here, but be very, very cautious. Yeah. हम्म. And just keep a lot more holding in Bitcoin and some that you can take a bet for a accretive return on Bitcoin Treasury. मुश्किल ही है. uh, मुश्किल ही yeah. है. So this is what this slide is about. What this means for each? Uh, या. if you can go one slide back, one or two. Yeah. For ASST, as I was saying, for ASST, it's win deal. Like anyways, ASST is going to accrete shares from 927 sats per share to 1147 sats per share, irrespective of MNAV. Uh, in terms of similar, you have to consider what is the MNAV of ASST. So this is complicated for a similar shareholders.
Yeah, next slide. Strategic vision still logical execution is everything. So this is what I was looking to interviews of my Matt Cole, this Eric Semler. So I think that when team will merge, I think it will make more sense for them. And there is a current consensus around what is the right number of bitcoins to issue preferreds. So I was looking to looking like I was watching their podcast where they were discussing about what happened in Bitcoin Treasuries and conference in New York. And before this, I think I missed a point. So consider the what I can say efficiency of Stripe's board or Stripe's management. Like they were at this Bitcoin Treasuries and conference maybe a week back or Hmm, 15 hmm, days, 10 15 days back. So this thing happened in Bitcoin Treasury and conference. All of the treasuries guys met there. Stripes guys talked with Semler, and in 2 to 3 days, it was Friday, by the way. Saturday, Sunday, and on Monday they announced this merger. So this is crazy. I mean, the efficiency of this board, like Matt Cole was stressing on this because the board, the management is made up of pure Bitcoin people who are who had a background in traditional finance. So their team is highly efficient in doing these kind of stuffs like financial hmm, engineering. So hmm, this is hmm, one hmm, of the hmm, hmm, good point in ASST. hmm, Maybe we can think about investing after the pipe unlock happens, and let's see what the MNAV, what will be the MNAV which they will trade. But I think the efficiency of taking this decision, like acquiring a company, is a huge decision. Like you can't go out and say that yeah, I'm acquiring this company. The things do not work like this. So I think they are quite efficient with their team and their board. hmm, But yeah, I mean, you have to see the valuations, like what are the valuation and what are the things happening. hmm, 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 hmm. एंड अभी Yeah, if you बिटकॉइन एक साल से उधर ही है रेंज में, सो yes, लाइक लेट बिटकॉइन रिप सम हायर एंड देन yeah, देखते हैं इन सब का क्या होता है, बिकॉज लोग अभी एक साल से वो डिसबिलीफ में चले चुके हैं, चले गए हैं yeah. जब से लास्ट लास्ट दिसंबर से हाल है, जब से एमएसटीआर ने ऑल टाइम है बनाया एंड ऑल. या सो दिस इज द टीएलडीआर. ठीक है ना, यू ऑलरेडी कवर्ड इट. ठीक है. सो लेट्स एंड दिस एसएसटी थिंग. थोड़ा बहुत छोटे मोटे न्यूज़ कवर कर लेते हैं. मेटा प्लेनेट ने मंडे को न्यूज़ किया ना, या दे बोट 5419 बिटकॉइन, नाउ दे होल्ड 2555 बिटकॉइन. ये इन्होंने लिया है जो उन्होंने 1.3 एमने पे जो डाइल्यूशन किया है, राइट, उससे लिया है. Yeah, एंड अभी और फंड भी आएगा उनका, और फंड भी है. दे yeah. विल पुट दैट. डीलन का पोस्ट भी था. कहाँ गया है भाई का. 600 million is यस. more left. ओके. ओके. 600 ये उन्होंने लिया, कितने का लिया ये? 632. हाँ, 6 तक उतना है. 1.4 बोल रहे थे, 1.2 ही आया, मतलब इनका 1.2 1.3 आया. बाकी का The उन्होंने खुद rest, को बोनस. बोनस. the rest remaining amount is invested into that Bitcoin income generation. हाँ, बोनस भी देते हैं ना लोग खुद को, हेवी मार्केट से. Uh, एक्सपेंस, सबकी सैलरी भी हाई है इन सबकी, लाइक yeah, I mean, लाइक. but that is not at that scale. What I think, uh, main portion is going into Bitcoin income generation business. ठीक है. So this बी is होडल एक न्यू कंपनी है. बी ब्रिटिश yeah. ब्रिटिश की है. नाइस. So this is So basically जो CWC है उसका SWC. SWC का alternate. This is the second company, right? Are there more companies in England, UK? Yeah, there are many companies. There is क्या क्या. Satsuma. There is हाँ, Satsuma. Yeah.
I think there is 2 to 3 Bitcoin company, or four Bitcoin companies, treasury companies in UK. Okay. So this company is also doing this. Like they Lightning will na. be using Bitcoin for work on Lightning Network. B hodl guys. And इसमें वो भी है अपना Danny Govel's what Bitcoin did वाला. He is also Yeah, investing yeah. in Beholder. Hmm. The founder of that Beholder also came into what Bitcoin did podcast. थोड़ा बहुत वो भी Yeah. कंट्रोवर्सी में चल रहा है, but yeah, one thing to People were notice. mad on Danny novels. Then, Like hmm. uh, before uh, before this announcement of he is into this Bitcoin treasury, he talked some bad things about Bitcoin treasuries, and uh, people were mad. Like one day before, Danny says like this is not good, treasuries are bad, and then next day he comes and says, "Yeah, I am an investor into a Bitcoin treasury." So things are getting into a weird zone in Bitcoin space. उस टाइप का हुआ ना ये, भूल गया मैं, भूल गया. I think वैसे ही वो हुआ वो कि वो Bitcoin treasury existed प्लेडिएटर. है. Lady, क्या क्या? go ahead. नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ प्लेडिएटर कोई अकाउंट एक है, वही ही इज वेरी विजिलेंट. Yeah. बस Hmm. वही बोल रहा था. Yeah. बताओ. हम्म. नहीं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि Bitcoin treasuries are risky, but we still are in Bitcoin treasuries a bit, right? So it's a bit like that. हम्म. Much या more. What was it? रिस्क है तो रिस्क है फिर. ऐसा ही हो गया है. ठीक है. ब्राजील्स बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी ऑरेंज बीटीसी वोट 3650 बिटकॉइन, मेकिंग इट द लार्जेस्ट बिटकॉइन ट्रेजरी इन कंपनी इन लैटिन अमेरिका. सही बिटकॉइन लिया है इन्होंने तो यार, नाम ही ऑरेंज बीटीसी. कैश, कैश करके भी था ना एक कंपनी, कैश बीटीसी. Yeah, yeah, yeah. Cash three something. कैश 3 Three यस. cash. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, देन विल रैप अप. BlackRock registered the name iShares Bitcoin Premium ETF, filing coming soon. This is covered call Bitcoin strategy in order to give BTC some yield. This will be a 33 export products equal to $87 billion IBIT. $87 billion है क्या ये? What is this? Yeah, The IBIT का BlackRock. है. Okay, This is okay. for IBIT. The Bitcoin ETF, plain Bitcoin, spot Bitcoin So ETF. नहीं, ये तो उसके जैसा है ना, ISBT, MSTY. 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 Yeah, yeah, yeah. हाँ हाँ हाँ. So MSTY is covered call strategy on MSTR. This what we can say IBIT premium income ETF. This is on Bitcoin. ना, ISBT की तरह, ISMT की तरह, मतलब जेफ पार्क. Yeah, yeah, IMST. IMST. Yeah. ISMT, यस. सो ये सब चीज़ें आती रहेगी धीरे धीरे लोगों को लुभाने के लिए, बट बिटकॉइन इज द बेस्ट. देर इज, यू डोंट नीड बिटकॉइन में, ये नहीं चाहिए यार बिटकॉइन में यार, पर लोगों को चाहिए ना, बिकॉज ऑफ बूमर्स को चाहिए, बूमर्स को चाहिए. Yeah. दे कांट होल्ड बिटकॉइन, उनको डर लगता है वॉलेटिलिटी से, उनको उनकी ऐसे आ जा उनकी हाथ में आ जाती है लोगों की बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी देख के, सच में. ठीक है. ये क्या इंसाइडर, हाँ ठीक है, ये सब हो रहा है भाई. लोग मेटा प्लान में भी फाइलिंग कंप्लेन फाइल कर रहे हैं अब. 200 डेट्स विद कंसर्न insider trading of treasury vehicles pre announcement with a deeper investigation on the cards. ये सच है ना? Yes. नाइस, चलो I मजा think आएगा. मैंने कौन सा? Bitcoin Treasury वेबसाइट चेक करी and they have just 190 companies listed. Bitcoin Quant में तो 130 companies listed है, and the case is on 200 treasury companies. Like ये कहाँ से आ रही है extra treasury companies? जितनी है नहीं उससे ज़्यादा पे तो case हो रखा है. No, they are talking about this. Now in the market there is this thing Saurabh called DATS. So DATS is Oh, not okay. a Solana, Ethereum, all of yeah, that. Oh, Ethereum and digital asset treasury. Digital digital asset asset. treasury. Yes, yes, yes. Bro. So, So things are getting weird.
This is shit coinery at a bigger level. Like these crypto coins were anyways a scam. Now they will happen at a much bigger level. बाप रे. And the people propagating this is they are making this argument like Bitcoin doesn't have native yield. So what we will do, we do a treasury on the Ethereum or Solana, and we will stake that and give you yield. And you यार know लोगों को what? अभी तक Like समझ नहीं आ रहा ना वो. Yes. part of this argument was made in the जो न्यूज़लेटर आया है ईटी में आज उसमें लिखा है कि the companies put this VDA for yield generation. You read that article and it's Oh, listed there, but that's not true about Bitcoin. It's true about other जेट kind of किंग, VDAs. जेट किंग वाले में Jetting is jetting वो हाँ jetting आर्टिकल में वाले ना. में, but that's not अरे रे. हाँ उसमें लिखा हुआ ही है. But हाँ वो technical Right. mistake है, but वीडियोस में हो तो रहा है ये. Yeah. Yeah. बट द सबसे सबसे फनी पार्ट एंड सैड पार्ट कि ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि बिटकॉइन, यू डोंट नीड यील्ड इन बिटकॉइन बिकॉज वो फिक्स सप्लाई जो है, तो उसकी प्राइस एवरीथिंग विल फॉल अगेंस्ट बिटकॉइन, तो दैट इज द यील्ड. वो लोग, इज इट रियली हार्ड कंसेप्ट टू ग्रास्प. लाइक मैं बहुत, मैं मेरे दोस्त है जो कुछ आईएएस ऑफिसर है, कुछ 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 डिफेंस में टॉप ऑफिसर है, नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा उनको, नहीं समझ में आ रहा. बोला क्यों, फिक्स सप्लाई से सब बर्बाद हो जाएगा, वो ऐसे बोलते. बोला कैसे चलेगी इकोनॉमी. फिर उनको मैं समझाता हूँ कि देखो कि हम दोनों की कंपनी है, 50% शेयर आपके पास है, 50% मेरे मेरे पास शेयर है. मैं अगर हर साल कुछ कुछ शेयर छापता हूँ और मेरे दोस्तों को बांट दूँ तो वो चलेगा क्या. तो बोला वो नहीं चलेगा. पर बोला कम इकोनॉमी में तो हमें छापना पड़ेगा ना, वरना इकोनॉमी कैसे चलेगी. तो यार 1 घंटा बात किया, मेरा सच में दिमाग खराब हो गया. और लाइक वो बंदा बोल रहा है We मुझे कि actually भाई, वो क्या बोल रहा है पता है, ही इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज. वो बोल रहा है कि भाई तू ये बिटकॉइन का कर रहा है इतने सालों से, तू देख ले एक बार, है ना, तेरा करियर बर्बाद ना हो जाए इसमें. यार मैं बोला भाई हद होती है यार. आई थिंक बट ना मेरे को अगर उसका ऐसा पॉइंट है कि देखो बिटकॉइन में भी ना मेरे को लगता है कि ऑरेंज पिलिंग इज डेफिनेटली नॉट a career thing, career move, unless you work in an exchange or unless you have Bitcoin treasury form. It's not a career move. You do it out of your conviction and you do it out of your love for other people. But it's definitely एग्जैक्टली not a यार. career move. Yeah. The second thing, पता है इंसान को motivate करता है fear and greed. So if you stop giving them this motivation that things will get expensive next year, run harder. I think a lot of people will not be able to function. A lot of economy will die down. We think that the economy will remain what it is, but some part of it is. Bitcoiners think it's useless economy. It's the one that runs on advertising. It's the one that runs on fake products. It's the one that runs on pressure sales and incentives, carrot incentives. That will die down. People will do what they truly are. People will choose those things because anything else, if they create, people will not spend their Bitcoin for those products and services. Bitcoin will become so expensive. But for a lot of people, they cannot foresee that, which is not completely wrong, because I think the world is made of almost 80% people of that kind. If there's no pressure to perform, if there's no incentive, if there's no marketing driving you, what will you consume? राइट. Right? सही बात है. I don't think your friend was completely wrong there. अच्छा, मैंने मतलब उनका एक काफ़ी चीज़ कहना था. एक था कि अगर बिटकॉइन अगर एक इकोनॉमी बन जाएगी तो जिसके पास बिटकॉइन नहीं हो तो गरीब हो जाएंगे, जिसके पास बिटकॉइन है वो अमीर हो जाएंगे. और बोला कि इसमें इनइक्वालिटी इससे मिट सकती है क्या. मैं बोला इनइक्वालिटी कभी मिट नहीं सकती, बट करंट सिस्टम जो है वो अनफेयर है. बिटकॉइन कैन ब्रिंग फेयरनेस एंड ब्रिंग एवरीवन टू द सेम ग्राउंड. तो बोला कि अगर तो It भी will be a इन different kind of unfairness. Bitcoin हाँ. will, I think, will also be a different kind of unfairness. नो 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 मतलब नो. अगर वो तो ऐसा कहना हो गया कि लाइक अगर आप लाइक कोई वो बोल रहा है कि जिसके पास ज़्यादा बिटकॉइन है वो तो उसको तो हैप्पी रहेगा. तो मैं तो बोलूँ कि अगर अमीर खानदान में पैदा होते या फिर तो भी आपकी लाइफ वो आपके हाथ में नहीं था ना, वो आपके हाथ में नहीं हाँ, था. सो वो तो एकदम I बहुत ही mean, नेगेटिव you व्यू can हो गया ना serve that जिंदगी के person. लिए. हाँ, आप उस बंदे को सर्व करो ना, bring products and services and accumulate Bitcoin.
वो तो है, दैट इज अ फेयर पॉइंट. बट या लाइक लोग अभी तक पता नहीं लाइक एंड एक आर्टिकल है एक पेपर है कि नेगेटिव थिंकिंग लोअर्स योर आईक्यू. फिर बॉब बर्नेट या कोई तो बोला था कि इफ यू आर नॉट होपफुल फॉर द फ्यूचर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिटकॉइन. सो एक थोड़ा काफी चीज वहां से मिल रही है. अगर आप सोच रहे हो कि दुनिया में सब अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, लाइक इफ यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक फॉर द फ्यूचर देर इज नो लाइक हार्ड चांस कि यू विल गेट बिटकॉइन. नहीं समझ में आएगा बिटकॉइन. बट इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, मैं जिसको ऑरेंज बिल करता हूँ 10 में से 9 या 50 में से एक बंदा समझता है वो दे आर ऑप्टिमिस्ट फॉर द फ्यूचर. दे आर नॉट नेगेटिव. वो बोले कुछ भी है बट या दे आर वेरी पॉजिटिव थिंकर्स. जो नेगेटिव थिंकर्स है दे आर नॉट एबल टू लाइक आप देखना जैसे एक बार आप भी देखना मेरे साथ तो ऐसा ही है. जो नेगेटिव थिंकर्स है दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिटकॉइन. काफी चीज तो लाइफ के लिए ही दुखी है. वो बोला लाइफ में दुखी दुखी है बस. वो तो यही बोलता है इवन इफ दे आर अर्निंग गुड अमाउंट्स मनी. फिर भी बट सो अब ये अभी ये पता है ये इवोल्यूशन के हम वो टाइम में आ चुके हैं कि जहां पर नेचर विल बी हार्ड, नेचर विल बी ब्रूटल एंड नेचर डजंट केयर. नेचर डजंट केयर. तो वो उस पार्ट में आए हम सो वहां पे देयर मुझे इज, ऐसा लग रहा है. अभी अभी ना मैं मतलब देयर इज पोस्ट दैट दिस गाय ना, इंडिया सी एडवाइजर कौन है, निर्मला सान्याल, सान्याल है ना, समथिंग लाइक दैट. संजय हाँ हाँ सान्याल. सान्याल. संजय सान्याल. संजीव सान्याल, संजीव सान्याल. हाँ. संजीव सान्याल का एक पोस्ट था, द चाइनीज ईवी मार्केट इज ब्रूटली कॉम्पिटिटिव and despite their global success many manufacturers are struggling to be profitable. This is how creative destruction works. It generates innovation and growth, but it is not a soft and a cuddly process. What is interesting is how CNN's report suggests that somehow this creative destruction is unhealthy. Just go back 100 years and see how American automobile industry emerged as a global leader. So he's basically saying कि ये जो creative destruction होता है, that creates the best outcome, right? And I do believe that creative destruction has been kind of taken away from human beings because हम इतना protect करके रखते हैं, pamper करके रखते हैं, money print करके serve कर यस. देते हैं. That will not exist, and that is not going to be easy. That is going to hurt a lot of people. We can say that you can be productive. You can why not positive कि you will create something useful, useful product and service, and people will pay you. But it is going to be highly libertarian society, wherein if you cannot produce something of use or value, how will you sustain yourself? There's no way to drawing from the future कि फ्यूचर से डेट लेके चला लेते हैं आज का काम. तो it's going to be hard, but it's going to again push humanity into a massive trajectory of improvement which we have not done यस for the last 500 years or 300 years. We are chilling. यस 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 सॉफ्ट बन यस. गया ना, सॉफ्ट मैन क्रिएट हार्ड टाइम, वो वाला टाइम आ हाँ गया है. वो टाइम है फोर्थ टर्निंग का भी है. बट या सही बात है. काफी लोगों को दिक्कत होगी जैसे आपने बताया लेकिन इट विल क्रिएट गुड टाइम्स. जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, जो लोग दोज हु आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर. सेल्फ Yeah. रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज कर रहा है एंड आई थिंक पीपल आर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर बार दे हर लाइक कोई बंदा आके यूट्यूब में कुछ बोल रहा है तो वो तुरंत बोल रहा है कि यार सरकार को इनको बोलने नहीं देना चाहिए. सरकार जैसे वो हुआ था एक कॉमेडियन का हुआ था तो बोला इसको बैन कर दो, इसको इसको भाई मत तुम मत देखो ना यार. तुम मत देखो. वो बात कर रहा है, वो कोई इलीगल कंटेंट थोड़ी दिखा रहा है. वो बस कुछ कुछ चीज गलत हो सकती है बट उसके कारण वही बात है लोग सीधा सरकार को बोलते हैं कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग भूल चुका है. नहीं, अगर आप चाहते हैं अब ये कोई बंदा समय का बात नहीं एक करे तो आप उसका मुंह बंद कीजिए. Like it's up to you. The thing is, यस यस prepare yourself for a world wherein a higher power, you have to become sovereign. Like a higher power is not going to save you from hurt or save you from hunger or save you from unemployment. Like you sort those things yourself out. That's where we are heading to. राइट. सब मिनियंस बने बैठे हैं ना, सबको बॉस चाहिए. हाँ, सच में देखते हैं. बट या प्लीज गाइस स्टडी बिटकॉइन, टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड आप अपना पैसा कमाते हो तो उसको स्टोर लाइक देखो कि गवर्नमेंट इज डाइल्यूटिंग योर लेबर योर टाइम बाय प्रिंटिंग मोर मनी. सो बिटकॉइन इज द वे आउट. देयर इज नो अदर वे आउट. गोल्ड इज द वन वे आउट बट ठीक है. ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं. छोटी मोटी दिस द मेजोरिटी कवर कर लिया हमने. 2 मिनट में कमेंट्स ले ले है ना. Yeah. Yes. या
Jet King can't raise fund to buy Bitcoin. Yes, Rahul. Hello, Rahul. As of now, they can't raise funds, but उनका real estate का sell is pending, and उन्होंने बोला है कि they will accelerate this to sell. तो let's see, देखते हैं क्या होता है if they are able to sell real estate and buy some Bitcoin. They can use funds, they can use their cash flow, they can use their profit, all of that they can do. What they cannot do is raise funds to buy Bitcoin. It's a misconception that USA can debt free using crypto. वो ये था ना, रशिया के बोला था ना कि स्टेबल कॉइन्स के थ्रू वो डेट फ्री होना चाह रहा है, बट डेट मुझे लगा डेट फ्री नहीं होना चाह रहा है वो लोग. दे विल बी एबल टू प्रिंट मोर सिंपली. हाँ, I डॉलर think को रनवे मिल it's not जाएगा. a misconception, Rahul. I think it is possible. आज क्या है कि They don't want to debt free, brother. They don't want to debt free हाँ, ना. they They don't. don't. They just want to print more. They never So want to be I debt mean the free. ramifications are same. Ramifications are very close. तो अभी क्या है ना, लोग बोल रहे हैं कि हम जो डॉलर्स रखते हैं, रशिया या चाइना जो डॉलर रखता है, they don't want to give it to US Treasury to earn 3%, 4% yield, right? Because they're like कि हम इनको देते हैं and then they confiscate us. If we do something in Taiwan, if we do something in Europe they confiscate our dollars. They're like नहीं देंगे वापस, right? So we don't want American dollar, and that is why you see this world getting into multipolar world wherein everyone is using their own currency for exchange of goods and services. तो उसमें यूएस ने क्या सोचा है कि अगर चाइना अपनी करेंसी रखेगा, इंडिया अपनी करेंसी रखेगा, रशिया अपनी करेंसी रखेगा, ईरान अपनी करेंसी रखेगा, इजराइल अपनी करेंसी रखेगा टू एंड फ्रो गुड्स के लिए, तो व्हाट इफ वी जस्ट गेट इन डायरेक्टली इनसाइड द कंट्री. सो अगर कंट्रीज हमारा डॉलर यूज नहीं कर रही, so what if we get to citizens using our dollar? And that's what these stable coins are. Tether, USDC, ये सब क्या है? These are basically you use Tether and वो कभी भी आपको ब्लॉक कर सकते हैं. आपका $50 है Tether पे या USDC पे, they can block it out. And every money that you hold on Tether, right? Tether gives that many dollars to US, invest in their treasuries. So in a way, they are wiping out their debt through your holding of fiat, dollar fiat, which is a crypto. So crypto will help US get out of their misery. The solution is Bitcoin. The solution again is Bitcoin. Like if you do not use USDT or stable coin or whatever that you are using, but know that you are harming, you are basically taking the burden of US debt. So get away from there, use INR, use Bitcoin, and that's a much better route to go. I mean, we can do a more detailed section on this. या बने आपने बहुत फुल बता दिया, अच्छे से बता दिया. सो राहुल, या दिस इज द आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आंसर यू कैन गेट. सही बताया. स्टेबल कॉइन करो, कुछ भी करो, सारी कंट्री कुछ भी करे, बट बिटकॉइन तो करना पड़ेगा सबको. बाकी आईएनआर स्टेबल कॉइन करो या फिर चाइनीज युआन स्टेबल कॉइन करो, बट बिटकॉइन इज मस्ट. बिटकॉइन डंप हुआ, बड़ा मजा आया भाई. चलो अच्छी बात है. या स्टे हम्बल, स्टे सेट्स. व्हाट्स हैपनिंग विद एमएसटीआर? एमएसटीआर की बात नहीं करी हमने. एमएसटीआर थोड़ा डाउन पे है, 300 पे है. सो एमनेव भी डाउन है, बिटकॉइन भी डाउन है. सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट, बट या लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड बेट फॉर मी. And yeah, same for maybe Digant and Setu, but they are market leaders. So you, ऐसा होगा, लाइक वो इतना, ये सब मार्केट ऐसा होगा कि तुम्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटी से निकाल देगा, वो इतना डिसबिलीफ में डाल देगा. सो यू स्टडी, आप उसके बारे में देखो क्या चल रहा है. नथिंग इज, कुछ चेंज नहीं हुआ है फंडामेंटली. दे हैव इनफ बिटकॉइन, लायबिलिटीज उनकी कम है, दे आर इवन बेटर कंडीशन देन द लास्ट बेयर मार्केट. सो yeah, I think it's a good opportunity if anyone wants to look at some Also, if you see, MSTR is now at a higher mNAV than Metaplanet, than Yeah. most of the Bitcoin treasuries out there. So this is kind of weird market right now. Largest Bitcoin holding is of MSTR, and they are trading at around 1.5 or 1.4 mNAV. And companies like Metaplanet, SWC, they are at 1.4, 1.15, 1.2. Some are at discount. So things are getting in a weird space. एक चीज यार पर्सनल एनेक्डोट. हाँ, go ahead, Bhavik. नहीं, ये हमने मुझे लगता था कि ऐसा तब होगा, बेयर मार्केट में ऐसा होगा कि बाकी सारी कंपनियां बहुत गंदे पे ट्रेड कर रही है, एमएसटीआर का एमने सबसे ज्यादा होगा. ऐसा मुझे लगा कैसे बेयर मार्केट में होगा, एंड बिटकॉइन बहुत डाउन चल रहा होगा.
बट बिटकॉइन इतना तो डाउन नहीं चल रहा, बट ये हुआ, ऐसा हुआ है, इट मीन्स कि दिस कैन बी द बेयर मार्केट ऑफ बिटकॉइन, एंड दिस लाइक बिटकॉइन का बॉटम, देयर इज हाई चांस कि इट बिटकॉइन क्रिएट्स अ बॉटम हियर, इट्स हाई चांस। एक वो सिग्नल देख सकते हो इसको, बिकॉज ऐसे बेयर मार्केट में होता है ऐसा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजरी कंपनी है वो सबसे हाईएस्ट एमने पे ट्रेड करेगी, नहीं? But एम आई logically, रॉन्ग? if we think by logic, is it easy for MSTR to increase their Bitcoin stack by 50% or sats per share by 50%? Or is it easy for Metaplanet, SWC, Capital B to increase their Bitcoin नहीं, per share by no, 20, no, 30, no, 40%? नहीं, arbitrage, right? That's the opportunity. Yeah. That's the opportunity. Smart money can sell MSTR right now and then get into Metaplanet or something. Like But you this can is tap your also MSTR ATM. what I think is like MNAV is highly sentimental multiple or sentimental indicator. Like what is the sentiment of a treasury company can be guessed by looking at their MNAV. For example, Naka, people don't like pipe, so they are trading at discount. For example, Metaplanet, they came from 2 MNAV to 1.2. Why? Because they did discount raise. MSTR is trading at 1.5. Why? Because they are transparent. They are doing these preferreds. Sailor has said some positive things about knots. I mean, this is sentimental, which what I think. MNAV is sentimental. Sentimental है, right? Yeah, It suggests the my sentiment. it's a personal anecdote, but like I sold Meta to put in money into MicroStrategy, and I was like very happy that I made this call the moment Trump got elected. Like I made this call. Right now, Meta would have given me more returns than MicroStrategy because so so yeah. I mean, it's difficult to know. Um, yeah. So the other thing is what I have Meta realized. with Facebook, right? Facebook, yeah. Yeah. Yeah, so I've realized one thing about me that I'm not a trader. I'm not really someone who can trade well, but I can see some value in something and hold it for a long run. And I would want to be behind Bitcoin for the long run and behind companies which I know will last like 4 years cycle, right? So I think MSTR is one of them. So yeah, if I you think if you want a secure company, then MSTR is one of them for the long run. But trading, I absolutely am not the right person. this also makes sense, or because it is according to your personal MNAV also. So let's say you entered at a MNAV of 2 when you sold a Meta for MSTR, and from that point in time, MSTR has literally, I mean, doubled or quadrupled their sats per share. Then essentially, your personal MNAV right now is zero point 0.5. So why would you sell? Every new share that MSTR is issuing, basically that is accretive to you. So this is what personal MNAV is. So you give some premium in the start, and after a point, from that point, it's like Bitcoin generator for you. So personal MNAV is this makes sense from for an investor who is in long term. And most of us I also don't trade much. I also have my major holdings in MSTR. I have been looking to Bitcoin, other Bitcoin treasury to invest, but I have not because of these crazy MNAV multiples. Now I am considering to put some of MSTR or roll some MSTR into some of these undervalued, but I have not yet done that. So yeah, Yeah, guys. There's the insight from the BTC strategy team. इसी के साथ, yeah, can we wrap up? Yep. yes. Yes. Okay, guys. Thank you everyone for joining. Saurabh, can you something is Announce. happening on 4th October, right? Bitcoin 4th share. October. Yeah, yeah, yeah.
So we are doing a meetup in Delhi. Let me give you the link so that you can announce it. Luma.com. So luma.com/Bitshala, the top one. Top one is a meetup that we are doing in Delhi. If you are in Delhi, come join us. We are starting the BitPlebs tour. As you know, BitPlebs is an event. It's a summit that we do in Goa. It's on 1st and 2nd November. So we are starting the tour all over the country. We are starting with Delhi. This is the first city that we are going for. Open the event. Nice. Bhavik. 4th October one na? 4th one. October. Go. Register? So Register? you can register here. It's free. And what we are doing in the event is we will tell you about what we do at BitPlebs. We will do a Bitcoin mining workshop and we'll do a Bitcoin Treasury seminar. So there's two small workshops in the event and a BitPlebs preview. So this is how we are starting our tour. We will do it later in Mumbai. Mumbai one is on 5th October, the next date. Right. So Mumbai may on 5th October we are doing it in Villaparla, right? And then we are doing it in Bangalore on 11th October and in Chennai 11th October. So this is the Chennai one at 11th October and the Bangalore one at 11th October. So you can join us in Mumbai, in Chennai, in Bangalore, or in Delhi. It would be awesome to meet you guys. Who is like these are on one date you are doing two cities. So who will be taking treasuries thing like? Yeah, so in other cities, we are not doing treasury because I'm Oh, not like flying to other cities. So I'm doing treasury in just Delhi right now. Mumbai okay. one we will plan sometime. Mumbai also Amol is doing just a Bitcoin session and a BitPlebs tour Yeah, yeah. in Mumbai. So yeah, you can go through Bitshala page on Luma and click on the event details on top to see what all is happening. And beneath Yeah. that, you will find all the things that we are doing on BitPlebs event. So if you scroll down, then you get the workshops at the BitPlebs event and the main event on the BitPlebs day. So it's luma.com/bitshala. I have added the link in the comment section. Yeah, Okay. luma.com/bitshala. Yeah. Nice. You can There see are all the भाई events. ये मंथ पूरा इवेंट पैक ऑफ इवेंट्स है. सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू बिटकॉइन, ट्रेजरी में एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन डू अटेंड दिस मीटिंग, दिस मीटअप. या Yeah. गाइस इसके बाद 2 मिनट रहना मीटिंग में 2 मिनट ठीक है. आफ्टर इट या ओके ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर. We'll meet in the next session. Bye, everyone. Number one thing you can do is educate the world on Bitcoin and let people know they need to figure out Bitcoin. And every one of you does make a difference, because I would never get those meetings if it wasn't like someone that went and said, you got to pay attention. And my last point to you, you do not sell your Bitcoin. Thank you. Thank you.